Okay, so let's repeat the mailing first, okay, within 2 minutes, and then we will move to the view tab. Okay, so mailing we have already done in the last class. We can write the letter, we can prepare the letter with the help of mailing. Suppose this is my matter and this is the subject. Right? So we just need to do only two things. The first thing is the matter. So matter is already ready here. And the first thing is uh, the receipts. Okay. So go to the mailing, click on the letter, select receipts. We have already Excel file. So go there. We'll merge data. Click on OK. Then go here, right? So all the details, this one, roll number, stream, then course. We can put enter as well, house number, sector. These all are the column. Okay, these are the column in that file which you have attached, right? Come here, then state, then country, then pin code. Now select all them. You can put in a better way if you want your all message all. So you can also use this thing here. This one. Then you can write here like string. Then you can write here course. So this is not required, but if you want, then you can put this thing, right? तो उससे पहले वो दिखाई भी देगा. So this is our own message, and that is the column name. The column, the data, whatever is in the column, that will come automatically one by one. Got it? So this is the views. Okay. So now it is okay, right? Just do some formatting if you required. Otherwise, go to the finish and merge, click on edit and click on OK. Your letter will be created here. You can see. Okay. So you have 15 record, 19 record in your Excel file and 19 letter are ready. Got it? Okay. And if we required any kind of changes like increase the font size, make some changes, change the name of the column. So what we can do, we can just close this file because this is the extra file, right? Letter one. Click on close this one, then go to the back side in this. This is your original file, and you can make any changes here. Okay. In this one, you can make any changes. Got it? Okay. So this all about we have done in the last class. Now
If we need something more, like if we want to print the name of receipts in envelope, okay, then what we need to do, we need to select here envelope, okay, and in envelope, what we need to do, just a minute. पहले सारा कुछ क्लियर कर लेंगे हम यहाँ से। क्लियर करने के बाद फिर हम यहाँ से लेटर की जगह क्या लेंगे, लिफाफे पे हम क्लिक कर लेंगे। और लिफाफे पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारे लिफाफे का साइज होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे साइज यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पेज का साइज है कैसा बन गया, आपके इनवलप के जितने साइज का बन गया, राइट। आप देख ही पा रहे हैं, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि भाई जो जो आपने लेटर बनाया उस लेटर को भी आप एक लिफाफे में रखेंगे ना, और लिफाफे के ऊपर भी आपको नाम चाहिए कि भाई आप किसको भेज रहे हैं। ओके, तो वो जो लिफाफे होते हैं ना वो भी प्रिंटर में इसी तरह से रख दिए जाते हैं, सेटिंग करके। ओके, जो प्रिंटर की ट्रे होती है उस ट्रे को छोटा करके उसमें वो सारे लिफाफे एक के बाद एक रख दिए जाते हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से यूज करते हैं कि टॉप में हमें क्या करना होता है, टॉप में हमें टू लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल वही वर्क करेंगे। एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे, उस फाइल को उठाएंगे वहां से, राइट। और फिर यहाँ पे अब उन सारे कॉलम्स को क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ओके, लाइक दैट, रोल नंबर, देन आई वांट ओनली सिटी, देन आई वांट स्टेट, देन आई वांट कंट्री, देन आई वांट पिन कोड। ओके, सो दिस इज द वे। अब ये लिफाफे पे भी हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्रिंट करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि लिफाफे में जिसके अंदर लेटर रख के हम ले भेजेंगे उसके ऊपर भी तो हमें लिखना होगा। तो वो हम खुद से थोड़ी लिखेंगे, वो भी हम ऐसे ही करेंगे कि हमने वहां पे क्या सेलेक्ट कर लिया, वहां पे हमने इनवलप सेलेक्ट कर लिया, और अब इनवलप पे भी हम फटाफट से क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो देखिए एक बॉक्स बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस वन। ये है हमारा क्या, फ्रॉम। ओके, तो फ्रॉम क्या है, कौन भेज रहा है उसके रिगार्डिंग है, राइट। लाइक दैट, जो भी आपने लिखा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। गॉट इट। तो ये है लिफाफे का साइज। और लिफाफे के साइज के लिए हमने यहाँ पे कुछ सेटिंग कर दी। करने के बाद फिर से हम इसको फाइनल कर लेंगे। और फाइनल करने के लिए जैसे ही हमने एडिट किया तो ये यहाँ पे सब बन के आ गया। ये सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए, 25 31 31 रिकॉर्ड है, ये 31 रिकॉर्ड आ गए, राइट। सीधा यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे और प्रिंटर में जो है वो साइज रखे, वो जो लिफाफे हैं उनको उस तरह से सेट करेंगे। और जैसे प्रिंट देंगे सब एक के बाद एक लिफाफे पे लिख के आना फटाफट से शुरू हो जाएगा, राइट। जो कंपनी के, स्कूल के, कॉलेज के जो इनवलप होते हैं वो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। ऑलरेडी प्रिंटेड का मतलब कि नीचे अपने आप से लिखा हुआ आता है उसमें, राइट। कॉलेज वॉलेज का नाम, स्कूल का नाम होता है ना अपने आप से, फ्रॉम। तो फिर हमें उसमें फ्रॉम देने की जरूरत नहीं रहेगी, बस टू टू देंगे हम। ओके, गॉट इट। तो ये वाला जो है ये यहाँ पे रिसिप्ट्स के नाम है, किस किस को लेटर जाना है वो सब उस फाइल से उठा के लेके आएगा। उसमें 31 रिकॉर्ड थे, तो 31 एनवलप यहाँ पे बन गए। अगर उसमें 340 भी होते तो 340 बन जाते, उतने ही टाइम में बन जाते। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ मेल मर्ज। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
इज देयर एनी प्रॉब्लम इन रिव्यू? क्या नहीं। ओके, सो कर लेना उसको, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज व्यू। So last one is view, right? And view means देखना. So whatever you have done, just you need to view all that. Okay? तो आप कैसे कैसे देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को? आपने सारा कुछ इतने सारे ऑप्शंस का यूज करके कोई बढ़िया डॉक्यूमेंट, कोई बुक, कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने, राइट? रिव्यू में सब स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक, इन सब चीजों को चेक करने की कोशिश की, राइट? उसके बाद अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ गो थ्रू करना है, पढ़ना है, चेक करना है, देखना है, राइट? तो उस सब के लिए जो सबसे लास्ट वाली टैब है जिसका नाम व्यू है, उसके अंदर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट? ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल रिलेटेड टू द व्यू ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट. Okay, if we will talk about the first group in the view, so first group name is view, right? That means you can see your document, you can go through with your document, right? These first three view are also available in your taskbar, right? Here in this area, these three are available because these three are the most important one. By default, when we open Microsoft Word file, so by default, which view are selected? Print layout, right? तो प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आता है आपका. तो प्रिंट लेआउट अगर आपका व्यू हो और ये आपका 100% हो जूम साइज, राइट? ये प्रिंट लेआउट हो और जूम साइज आपका 100% हो, तो जैसा आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही डॉक्यूमेंट प्रिंट में निकल के आता है. ओके? अगर ये डॉक्यूमेंट सिर्फ मुझे पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना है, इसको मुझे रीड करना है, तो फिर मुझे इन सब ऑप्शंस की क्या जरूरत है? मुझे एक बेस्ट इंटरफेस दिया है और वो बेस्ट इंटरफेस दिया है मुझे रीड मोड व्यू में. ओके, दिस 2 pages at a time. If you want one, then you can increase the zoom size. Okay. So this is for reading purpose. With the mouse or scroll button of the mouse, with the arrow button of your keyboard, with the these icons left or right arrow button, you can go to one page to another page. Because if you want to read only, if you want to just want to read only a document, then other options are not required. Okay, this one is the best one interface. Okay, come to the layout, print layout, the normal one, whatever you are seeing. Sometimes we also need to, see the document in the big layout. So big layout we have in the web layout, right? So this is the web layout. So as per requirement, we can use any one. Okay, got it? Okay. The next one is focus, outline, and draft is also there. In outline, it will become look like that. Okay, you can draft in the document. So not required. Come to the focus, and if you will click on the focus, then it will become like it is much more interactive. रीड मोड तो था ही, फोकस में भी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा. गॉट इट? आप स्क्रॉल बटन से, कंट्रोल बटन और स्क्रॉल बटन को आगे पीछे करके क्या कर सकते हैं, जूम साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं. ओके, एस्केप बटन कभी भी कहीं भी प्रेस कर सकते हो बाहर आने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज इम्प्रेसिव रीडर. पहले भी था, अभी भी है, एक न्यू टैब ओपन होके आ गई. कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. वृत्त कितनी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट की, जो आप सिर्फ देखना चाहते हैं, जिसको गो थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, राइट? पेज का कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर.
लाइन फोकस दिया हुआ है कि एक लाइन एक बार में देखेंगे या 2 लाइन देखेंगे या 5 लाइन देखेंगे, टोटली अप टू यू। टेस्ट स्पेसिंग, बीच में टेस्ट का साइज कम या ज्यादा हो वो आप देख लेंगे, राइट। रीड ए लाउड, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि यू कैन गो Themes थ्रू and विद योर styles डॉक्यूमेंट। help keep your document coordinated. When you click design and choose the new theme, the pictures, charts, and smart art graphics change to match your new theme. Got it, ma'am? Got it. So this was the impressive reader. Now this is the vertical form of your document, side by side. If you will be click, then you can go with side by side. माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है, गोल गोल बटन होता है, उसकी हेल्प करके आप अच्छे से फ्लिप कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको मैक्स जैसे ही वर्टिकल पे आएंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, राइट। तो ये गो थ्रू करने का भी है और ये किसी पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए भी यूज होता है। ओके, रूलर आप क्लिक करेंगे तो रूलर आपका आ जाएगा वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, राइट। आप ये रूलर का यूज यहाँ से कर पाएंगे। जो आपके अलाइनमेंट होते हैं, मार्जिन जो होते हैं, उनको कम ज्यादा आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये आपको यहाँ पे स्टॉपर्स दिखाई दे रहे हैं, स्टॉपर्स को उठा के आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, लेके जा सकते हैं, राइट। गॉट इट। नेक्स्ट वन आपके पास ग्रिड लाइन है। सम टाइम इफ यू रिक्वायर्ड ए ग्रिड लाइन in the back side of your document, then you can use this grid line. Okay, navigation pane is nothing, only that window where you can find all the heading, all the pages, and if you are searching anything, so you can search that thing, right? Basically this is nothing but find options in the home tab. Got it? Got it. Next one is the zoom size. You can zoom your document, you can zoom from here also, but if you want to directly zoom with a particular percentage, then you can